Mr. Jaishankar, India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want, whenever you want? Okay. First of all... I mean, you're sitting next to each other. No. So. First of all, delighted to be here. And I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when, when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. So I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से. जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में. मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड. सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस. अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं. सो वन, हम पे एहसान ना करें. लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में. जहां भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है. सो अमेरिका भी जारी बात है, जहां जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं. और मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे. जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं. सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game. Tony Blinken ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu.
इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है। यू हैव टू सर्वाइव योर, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। सो इफ यू आर ऑन द टेबल, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ, हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि this is what he told Antony Blinken, and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम, वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहे हो, वी डोंट लाइक दिस। So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट। आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे बैक इन फ्यू डेकेड्स बैक वी हैड एन ऑप्शन, आइदर वी शुड गो टू द सोवियत यूनियन और वी शुड गो टू द अमेरिकन ब्लॉक, एंड वी डिसाइडेड टू बी इन द अमेरिकन ब्लॉक एट दैट टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शंस। सो ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो। आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी इन अ सेंस कि ही वाज हैप्पी, इन अ सेंस कि, या आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैप्पी, मतलब ही वाज लुकिंग डॉक्टर जयशंकर फ्रॉम अ लेंस कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है। और वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एस्टोनिश्ड भी था कि मतलब ही इज टॉकिंग दिस वे। सो लेकिन वो ही वाज लिसनिंग हिम वेरी केयरफुल इन अ सेंस कि जर्मन तो चलो ठीक है, उस तरह उनकी पोजीशन नहीं थी जिस तरह अमेरिकन की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने कहा जी जो ब्रिक्स है, अब इन अनदर वे, so the Indians are justifying their position in the BRICS, which is the only maybe or the second maybe the multilateral bloc against the Western institutional dominance, which is आपकी जो है, अब जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो थे, दे आर इनटू इट। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों वेस्टर्न डोमिनेंस के नीचे रहें, ठीक है जी। और अभी वो कह रहे हैं 30 ममालिक इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद यू एज वेल। So Dr. Jaishankar ne, he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती, मेरी होशियारी को admire करो यार। तुम क्यों jealous हो जाते हो कभी कभी मुझे देख के? So ये थी डॉक्टर जयशंकर की, अगर आप उसको you watch it and वो जो I liked it a lot जो उसने कहा कि अच्छा look, they are enjoying and they are emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians.
The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative of the global south because they believe that we have the higher aims. So India and China का जो fixed है इस position में कि India is not going global, but India wants to keep it in the region and particularly in the global south. Although the global south is nothing, just like abstract imagination है. It's a very good point, which brings me to the BRICS and the rise of middle powers, because that is one of the shifts that we see today. To what extent do you think that that is a challenge to the West, or maybe that can be sort of the bridge, especially in a world where we will see continued competition between the US and China? And I'm going to ask Minister Jaishankar first, but I'd love for both of you to come in as well. I thought maybe the BRICS one you wanted the US. After you, Jack, please. Look, again, I think it's important to go back to how it began. The BRICS started in an era where Western dominance was very strong. The premier gathering of the world was the G7. And you had a number of significant powers in the world who felt that, well, they were not part of the G7, but maybe they also brought value to the table by sitting and discussing with others. So in a sense, you had a collection of these countries. It was originally 4. South Africa joined later. If you look at it, it's a very interesting group because it's geographically as disparate as it can be. Yet it is bound by the fact that these discussions we've had over a decade and a half have been very useful for all of us. Now, like any product, you test it in the market at some point. We tested it last year and asked people, so how many of you want to join BRICS? And we got almost 30 countries who were willing to join BRICS. So clearly, if 30 countries saw value in it, there must be something good we've done. So I think it's important today to make a distinction between being non-West and anti-West. Mm-hmm. I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. Not everybody else necessarily in that grouping might qualify for that description, but the contribution the BRICS has made, if one looks at the G7 and imagination hai, because in the global south you find it's not a koi political bloc nahi hai, ye koi ethnic bloc nahi hai, ye koi religious bloc nahi hai. Global south is sort of a geographical division. ठीक है, जहां पे आप ये कहते हैं जी ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, so this is the global south, this is underdeveloped, it has not developed, and there is a theory on this that north south divide है कि भाई the north has been exploiting the resources of global south, extracting all the raw material, going into the north.